As per the Constitution of India, panchayats at the intermediate level may not be constituted in a state having a population not exceeding 30 lakhs, 40 lakhs, 10 lakhs, 20 lakhs. Answer about D, 20 lakhs. Panchayats at the intermediate level may not be constituted in a state having a population not exceeding 20 lakhs. Question number 2. The first health minister of independent India was Maulana Abdul Kalam Azad, Sardar Vallabhbhai Patel, Vijay Lakshmi Pandit, Rajkumari Amrit Kaur. Answer अब आपनकर D, Rajkumari Amrit Kaur. ठीक अछि. Next question. Question 3. The inaugural session of the Supreme Court of India took place on 28 January 1950, 29 January, 31st January or 26 January. Answer of आपनकर A, 28 January 1950. The inaugural session of the Supreme Court of India took place on 28 January 1950. Question number 4. Who was appointed as Assembly's constitutional advisor in 1946 during the framing of Indian Constitution? B.N. Rao, B.R. Ami Iyengar, K.M. Munna-Dabharkar, Gopal Swasey. Answer of आपनकर A, B.N. Rao. B.N. Rao was appointed as the constitutional advisor to the Constitutional Assembly in formulating the Indian Constitution in 1946. He was responsible for the general structure of the democratic framework of the Constitution and prepared its initial draft in February 1948. Question number 5. Which of the following is not a constitutional body? Financial Commission, Niti Aayog, National Commission for Scheduled Tribes, Election Commission. Answer above be Niti Aayog. Niti Aayog, former planning commissioner, has never been passed an act of parliament nor has it been mentioned anywhere in the constitution, and thus it is definitely neither a statutory nor a constitutional body. It was formed on 1st January 2015. The Prime Minister is always the chairperson of Niti Aayog. Question number 6. Which of the following adjectives is not a part of the preamble? Liberty, tolerant, sovereign, secular. Answer of आपन B, tolerant. Tolerant is not a part of the preamble. Question number 7. How many members were there in the drafting committee of the Indian Constitution? 5, 7, 3 or 10. Answer of आपन B, 7. The drafting committee consisted of 7 members. It was set up on August 29, 1947. The committee was responsible for preparing the draft of the Indian Constitution. Question 8. Who had headed the drafting committee of the Constitution? Dr. B.R. Ambedkar, Jawaharlal Nehru, V.P. Menon, Sardar Vallabhbhai Patel. Answer आपन Dr. B.R. Ambedkar. Okay. Question 9. Who headed the Provisional Constitutional Committee? Rajendra Prasad, Sardar Vallabhbhai Patel, V.P. Menon, Jawaharlal Nehru. Answer आपन भी Sardar Vallabhbhai Patel. Question number 10. Which type of citizenship is provided by the Constitution of India? Single citizenship, regional citizenship, dual citizenship, temporary citizenship. Answer A, आपन single citizenship. Indian Constitution provides for single citizenship, which means that there is no concept of state citizenship. Also, one cannot have of India and any other country simultaneously. The Constitutional Constituent Assembly adopted the Constitution of India 26 November 1949, 26 January 1950, 26 November 1947, 26 January 1947. Answer of 26 November 1949. The Republic is governed in terms of Constitution of India, which was adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949, and it came into the force on 26 January 1950. In 1967, which of the following language was included in the list of state languages of the Indian Constitution? Bengali, Sindhi, Telugu or Tamil? Answer option B, Sindhi. Okay. Sindhi language was added in 1967. Thereafter, 3 more languages, Bhaya, Konkani, Manipur and Nepali.
were included in 1992. Subsequently, Bodo, Dongri, Maithili, and Santali were added in 2040. So, year mone rakhibe most important questions hobe bada. Question number 13. Who is considered as the father of the Indian Constitution? Rajendra Prasad, Bal Gangadhar Tilak, Jawaharlal Nehru, Bhim Rao Ambedkar. Answer Bhim Rao Ambedkar. Okay. Bhim Rao Ambedkar is considered as the father of the Indian Constitution. He was a chief architect of the Constitution of India. He was appointed chief chairman of the Constitutional Drafting Committee in 1947. He was the Independence India's first Minister of Law and Justice. It a mon rakhitive. It be both bar podichi question. Question 14. Who among the following was not a part of the Constitutional Assembly responsible to draft the Constitution? Mahatma Gandhi, Sardar Vallabhbhai Patel, Jawaharlal Nehru, Dr. B.R. Ambedkar. Answer ଆପଣଙ୍କର Mahatma Gandhi. Okay, Mahatma Gandhi ନଥିଲେ ଏଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ not a big deal question. ଆପଣ କ'ଣ ଏଲିମିନେସନ୍ କରିବେ ତାହେଲେ? Question number 15. Who was the chairman of the drafting committee of the Constitutional Assembly of India? Rajendra Prasad, Sardar Vallabhbhai Patel, Jawaharlal Nehru, B.R. Ambedkar. Answer ଆପଣଙ୍କର D. B.R. Ambedkar. ठीक ଅଛି. Question number 16. On which day is Constitutional Day celebrated every year in India? 13 November, 15 October, 26 November, 2 October. Answer number C. 26 November. এটা মনে রাখতে বহুত বড় Constitutional Day, also known as Samvidhan Divas, is celebrated in our country on 26 November every year to commemorate the adoption of the Constitution of India. On 26 November 1949, the Constitutional Assembly of India adopted the Constitution of India, which came into effect from 26th January 1950. এটা মনে রাখতে important question. Question number 7. Who described the preamble of the Indian Constitution as the political horoscope of the Indian Constitution? N.K. Pakhiwala, Kanhaiyalal Maniklal Munshi, Thakur Das Bhargava, Bhim Rao Ramji Ambedkar. Answer ଆପଣଙ୍କର B. Kanhaiyalal Maniklal Munshi. ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ. Kanhaiyalal Maniklal Munshi described the preamble of the Indian Constitution as the political horoscope of the Indian Constitution. When was the first constituent assembly election held in India? 1947, 1946, 1949, 1948. Answer ଆପଣଙ୍କର B. 1946. The cabinet mission envisaged the establishment of the Constitutional Assembly to frame a constitution for the country. The first constituent assembly election held in India in 1946. Members of the Constituent Assembly were elected by the provisional legislative assemblies. Question 19. In which year did Motilal Nehru, chairman, and 8 other Congress leaders draft a constitution for India? 1925, 50, 28 or 30. Answer ଆପଣଙ୍କର C. 1928. The Motilal Nehru report 1928 was made by a committee headed by the Pandit Motilal Nehru. This committee was created when Lord Birkenhead, Secretary of the State of India, asked the Indian leaders to draft a constitution for the country. Okay. Last question. Which of the following is not a feature of the Indian federal system? Written constitution, independent judiciary to settle dispute, single tier government, division of power between the center and the state. Answer about C. Single tier government. Single tier government is not a feature of the Indian federal system. India has 3 levels of government: union government, state government, and local government. हेलो डियर फ्रेंड्स, बिजनेस हेल्पलाइन चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज हमें देखिबा आर्यन स्टेट स्पेशल ओडिशा कैप्सूल जो थे कि कंप्लीट नोट्स ऑफ ओडिशा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, हेरिटेज एंड कल्चर रही छी। आपण को पई एडा जदी आपण माने जदी OSSC, OSSSC, OPSC, OUSSC टीचिंग जेकोसी एग्जाम पे प्रिपेयर करछन निश्चित भाबरे आपण मानको हेल्पफुल रहइबो। ता सहित आपण चैनल को प्रथमे सब्सक्राइब करि नियंतु, काइना एमिति कंटेंट आपण को बहुत बहुत आपण को फ्री रे मिलुची। चलो तो देखिबा ए बहिर गोटे भलो जिंस कोन अछि ना, मेरिट बूस्टर कंटेंट से माने बनै प्रिपेयर करछन जो मान टॉपर एजुकेटर आ आपण को एथे भलो जिंस कोन ना, टाइम सेविंग और रिवीजन बहुत भलो भाबरे हे परछि। ता सहित आपण को बार बार आ किछि मेटल किना पड़िबो, गोटे बहिरे सब जिंस भलो अछि। आ ओडिशा कैप्सूल हैंड नोट रो गोटे फीचर्स 4टा फीचर इंपोर्टेंट कया गले
ଆପଣ ଇମେଜେସ୍ ଆଉ ଇନଫୋଗ୍ରାଫିକ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଯାହା ଗୋଟେ ଇମେଜ ରହିଲା ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଆକୁରେଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ଅଛି, ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ଆସିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ଆସିଲା, ସେଇ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରଖିଛନ୍ତି ସେଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ଏଇ ଜିନିଷ ବହୁତ ଥର ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୂଚୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା କଥା ଆମେ ବାର ବାର ତାକୁ ରିଭିଜନ୍ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ମେମୋରି ବୁଷ୍ଟର, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମନେକର ସେନ୍ସସ୍ ଗୋଟେ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ପିକ୍ଚର ଦେଲେ, ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଏଣ୍ଟଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତ ଜିନିଷ ବାହାରିଛି ତାକୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ ଭଳିଆ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ OSSC ସିଲାବସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମି, ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଓଡ଼ିଶା ଜୋଗ୍ରାଫି, ଓଡ଼ିଶା ହେରିଟେଜ୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚର 10th କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ 10th କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଟଅପ୍ କରିବେ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ପ୍ରଫେସର ଲେଭେଲର ଥାନ୍ତି ହେଲା। ସେମାନେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଆପଣଙ୍କର ବିଜେପି କଲେଜ ଏଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଲେଭେଲର ସେଇ ଲେକ୍ଚର ମାନେ ବନାନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ଯାହା ଆସିବ ସେମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନେଇବେ, ନ କି ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର କ'ଣ ଆସିବ ବୋଲି ହେଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ସେଠି ପଚାରି ପାରନ୍ତି କୋଶ୍ଚିନ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ୟାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ 34ଟା ଚାପ୍ଟର ହେଲା। ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ବେସିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନକୁ ଯଦି କହିଲେ 92 ପେଜର ଟୋଟାଲ୍ 35ଟା ଚାପ୍ଟର ଏଠି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ସବୁ ପୁରା ଠିକ୍ ପଶୁଛି ଯେମିତି ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରୁ ବହୁତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଫ୍ରିରେ ପଢ଼େଇ ଦେଇଛି ହେଲା। ଯେମିତି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏଇଟା ପଢ଼େଇ ଦେଇଛି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ପଢ଼େଇ ଦେଇଛି, ଆନିମାଲ୍ ହଜବେଣ୍ଡାରୀ ଓଡ଼ିଶା ଏଟା ପଢ଼େଇ ଦେଇଛି, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଇନ୍ ସିନେମା ଓଡ଼ିଶା ଏଟା ପଢ଼ା ହେଇଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ପଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ଏଜୁକେସନ୍ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏଟା ପଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବେସିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଯେତିକି ବାକି ରହିଲା କିଛି ଚାପ୍ଟର ସେଟା ସବୁ ପେଡ଼୍ରେ ଅଛି। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁଯାକ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ପାଖାପାଖି 20ରୁ 25 ମିନିଟ୍ କି 40 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରାଇକି ତାକୁ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ବୁଝେଇକି ସାରିଛି ଆମମାନେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ ଚାପ୍ଟରକୁ ମିଶାଇଲେ 15 ଘଣ୍ଟାର ଭିଡ଼ିଓ, ମାନେ 15 ଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ଚାପ୍ଟର ସରିଯିବ। ଆପଣ ପୁରା ମାଷ୍ଟର ହେଇଯିବେ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେରେ। କୌଣସି ବି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ମାର୍କ କଟିବନି ହେଲା, କାହିଁକିନା ଏତେ ଡିଟେଲରେ ସେ ବହିରେ ଡିଟେଲ ଦେଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ କଥା କ'ଣ ନା, ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଚାପ୍ଟରର ଭିଡ଼ିଓ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, କିଛି ଫ୍ରି ସର୍ଭିସ୍ ବି ଦେଇଛୁ, କିଛି ପେଡ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବି ଆମେ ରଖିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ପେଡ୍ ସର୍ଭିସ୍ ନ ପାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ 50% ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ରହୁଛି। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି 50% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି। ସମରି ନୋଟ୍ ମାନେ ଆପଣ ଚାପ୍ଟର ସରିବ ଯେଉଁଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ସମରି ନୋଟ୍ ମିଳିଯିବ, ତାକୁ ପଢ଼ିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଡେଲି 12ଟା MCQ for 35 days, ମାନେ 420ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବେସିକ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟା ପଡ଼ୁଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ସେଇ ଲେଭେଲର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଓଡ଼ିଶା 360 ଡିଗ୍ରୀ ଇ ବୁକ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ହେଲା। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାର କି ମାର୍କେଟ କଷ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ 50 rupees, ବଟ୍ ଏଟା ଫ୍ରି କଷ୍ଟ ମିଳୁଛି। 35 ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଦେଉଛୁ। ସେଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟା ପରଚେଜ୍ କରିବେ ସେଇମାନଙ୍କ ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ହିଁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ପରଚେଜ୍ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ହିଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବ, ଫ୍ରି ବାଲା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ନହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମିଳିବ, ସେଟା ଆପଣ କୁଇଜ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 35 ଟଙ୍କା ହେଲା। 35 ଟଙ୍କା ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଏଟା ଆଫୋର୍ଡ଼ କରିପାରିବ, ଏମିତି ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା, 35 ଟଙ୍କା ନେଇକି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯିବିନି, କାହିଁକିନା ଏତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ବହିଟା ଫଟୋ ଉଠାଇ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ PDF ବନାଯିବ। PDF ବନା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସଫ୍ଟୱେର୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ତାକୁ ବୁଝେଇବ ଜଣେ ହେଲା। ତାପରେ ବାକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁଇଜ୍ ଦେବ, ଏତେ ଜିନିଷ ଜଣେ କରୁଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ 35 ଚାପ୍ଟରର ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିଗଲା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ପଡ଼ିଲା? ଟଙ୍କାଟେ ପଡ଼ିଲା। ଟଙ୍କାଟେ ତ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଜିନିଷ କିଛି କହୁନି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଯେଉଁଟା ମୁଁ 7 ଘଣ୍ଟାର ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଛି, ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫ୍ରି ଚାପ୍ଟର ବି ଅଛି, ପେଡ୍ ଚାପ୍ଟର ବି ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପେଡ୍ ଚାପ୍ଟର, ପେଡ୍ ଫ୍ରି ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଟାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ
मात्र 35 टंका आपण भाबंतु जे एटा आपण कले ओएसएससी जिले काम रे आसीबो अपकमिंग जेतिक रिक्रूटमेंट आसीबो गवर्नमेंट रो सब जगह रे आपण ओडिसा निश्चित पड़िबो 35 टंका इज नॉट ए वेरी बिग डील आपण गोटे एबे जाय कि बाहर मोमो खाइले कि गुपचुप खाइले कि जा खाइले मोटे आपण 35 टंका रो भी अधिक खर्च होस तनो 35 टंका इज नॉट ए बिग डील आपण माने क्यूआर कोड स्कैन करी मते 8993719011 नंबर मते व्हाट्सएप करिवे व्हाट्सएप करले मु आपण मान को डिटेल्स क्रॉस चेक कला परे आपण मान को आपण मेल आईडी मागी आपण को वीडियो एक्सेस दे देबी ओके आज रा वीडियो जति आपण भल लागला निश्चित नंबर आपण माने मते कमेंट सेक्शन जणबे आपण मतामत कोन थैंक यू सो मच Question number 1. The ideas of liberty, equality and fraternity contained in the preamble of the Constitution of India are borrowed from which of the Constitution of which country? Australia, Canada, Germany or France? Answer of आपनकर D. France. The Indian preamble borrowed its idea of liberty, equality and fraternity from the French Constitution. The Indian state came to be recognized as the Republic of India in the lineage of the Constitution of France. In 1946, who among the following was made the interim president of the Indian Constitutional Assembly? Sarojini Naidu, Sachidananda Sinha, S. Subramania Iyer, Sachindra Nath Sanyal. Answer of option B. Sachidananda Sinha. Sachidananda Sinha was elected as the provisional president of the Constitutional Assembly. Question number 3. The total membership of the Constitutional Assembly was 38, of which dash were representative of the princely state 84, 102, 109, 93. Answer of option D. 93. The total membership of the Constitutional Assembly was 389, of which 292 were representative of the provinces, 93 represented the princely state and 4 were from the Chief Commissioner Province of Delhi, Ajmer, Marwara, Coorg and British Balochistan. Question number 4. The number of the Constitutional Assembly signed the Constitution of India on dash 26 November 1948, 24 November 1950, 26 November 1949, 24 January 1952. Answer of आपन को 24 January 1950. 24 January 1950, the last meeting of the Constitutional Assembly, the Constitution of India, with 395 articles, 8 schedule 22 part was signed and accepted by all. Question number 5. In which of the following years did the Indian National Congress make the demand for a constituent assembly? 1939, 1990, 28 or 34? Answer of आपन को D. 1934. An idea for a constituent assembly was proposed in 1934 by M.N. Roy, a pioneer of the communist movement in India. It became an official demand of the Indian National Congress in 1935. Dash helps in presenting a set of rules and the principle on which all the people of the country can agree as the basis for the way in which they want the country to be governed. Constituent, preamble, document, contract. Answer अपना constituent. Okay, सही जिनसटा को हमें खाली डैश रे रखि दिछु आंसर है एटा ठीक अछि एक्सप्लेनेशन. Question number 7. The Constitution of India was handwritten by the most important question बहुत पिला जान नथन एटा कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, बाला साहेब गंगाधर खेर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, श्याम प्रसाद मुखर्जी. आंसर ऑप्शन सी. प्रेम बिहारी नारायण रायजादा. Prem Bihari Naran Rajada 1901 to 1966 was an Indian calligrapher. He is notable for being the calligrapher who hand wrote the Constitution of India. मुझ पहले question number 8. When did the first meeting of the Constitutional Assembly take place? December 1946, August 1945, January 1950, July 1948. Answer again December 1946. A Constituent Assembly met for the first time in New Delhi on 9 December
1946 in the Constitution Hall, which is known as the Central Hall of the Parliament House. Question 9. What is the minimum age prescribed by the Constitution of India for appointed as the Governor of a state? 35, 21, 25, 30. Answer of A 35 years. 35 years is the minimum age prescribed by the Constitution of India for appointment as Governor of a state. Question 10. The Constitution of India adopted by many institutional details and procedures from the Government of India Act 1935, Indian Partnership Act 1932, Indian Registration Act 1930, Indian Companies Act 1930. Answer A. Government of India Act 1935. The Constitution of India adopted many institutional detail and procedure from the Government. 11. The idea of the residual power in Indian Constitution has been taken from the Constitution of South Africa, Canada, Japan, USA. Answer of B. Canada. Question number 12. Which of the following feature of the Indian Constitution was taken from the Soviet Socialist Republic? Fundamental right, 5-year plan, preamble, concurrent list. Answer of 5-year plan. Question number 13. The power of the judicial review in the Indian Constitution and the provision of the independence of the judiciary is taken from which country? Australia, Germany, Japan, America. Answer of D. America. Question number 14. In the Indian Constitution, the principle of liberty is borrowed from which of the following countries? UK, Japan, France, Germany. Answer option C. France. The Indian Constitution, the principle of the liberty is borrowed from France countries. The makers of the Indian Constitution took the principle of freedom, equality and fraternity from which constitution? French, Canada, British or Ireland? No answer French. Question number 16. Financial emergency provision of Indian Constitution have been borrowed from Canadian, American, Irish, Germany. Answer about German. Question number 17. Which of the following provision and the constitutions of the different country from which they have been adopted in the Constitution of India has been incorrectly paid? Incorrectly paid. Incorrectly paid. ମାନେ ସେଟା ଭୁଲ ଅଛି ମାନେ कंट्री आमर से जो आम आडप्ट कर मैच कराइबा सेटा करेक्टली मैच कराइबा बट ये इनकरेक्टली पैड को खोजे को होइछि. A. The ideas of the rule of the law, British Constitution, Charter of Fundamental Rights, United States Constitution, Directive Principle of the State Policy, it is Communication Constitution, or Principle of Liberty, Equality and Fraternity, Canadian Constitution. आपन आंसर about D. कौन फुल अच्छे देखिए. Principle of Liberty, Equality and Fraternity were borrowed from the French Constitution. Federation with a strong center, residual power with the center, and distribution of the power between the center and the state is borrowed from the Canadian Constitution. जोटा कि ये कौन दे दिला आपनकर एटा भूल दिला. ठीक अछि. Question 18. The procedure for the nomination of member to the Rajya Sabha in the Constitution of India is borrowed from which of the following countries' constitution? Russia, Germany, Ireland, or USA? Answer of Ireland. Question number 19. The procedure for the amendment of the Constitution in the Indian Constitution is borrowed from which of the following countries' constitution? Russia, Germany, South Africa and Canada. Answer of C. South Africa. Indian Constitution borrowed the provision for procedure for amendment of the Constitution from the South Africa Constitution. Question number 20. Last question. Which of the following article of the Constitution of India deal with the Uniform Civil Code? Article 43, 44, 45, 46. Answer of B. 44. এটা বহুত চর্চার আছে এটা মনে রাখতে পড়িও পরীক্ষায়. The term Uniform Civil Code is explicitly mentioned in Part 4, Article 44 of the Indian Constitution. Article 44 says the state shall endeavor
to secure for the citizens a uniform civil code through the territory of the India. हेलो डियर फ्रेंड्स, बिजनेस हेल्पलाइन चैनल को आपण मान को बहुत बहुत स्वागत। आज हमें देखिबा आर्यन स्टेट स्पेशल ओडिशा कैप्सूल जोते कि कंप्लीट नोट्स ऑफ ओडिशा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, हेरिटेज एंड कल्चर रही आपण को पई एडा जदी आपण माने जदी OSSC, OSSSC, OPSC, OUSSC टीचिंग जेकोसी एग्जाम पे प्रिपेयर करछन निश्चित भाबरे आपण मान को हेल्पफुल रहइबो। ता सहित आपण चैनल को प्रथमे सब्सक्राइब कर नियंतु काइना एमिति कंटेंट आपण को बहुत बहुत आपण को फ्री रे मिलुची। चलो देखिबा ए बही रे गोटे भलो जिंस कोन अछि ना मेरिट बूस्टर कंटेंट से माने बनै प्रिपेयर करछन जो मान टॉपर एजुकेटर आ आपण को एथे भलो जिंस कोन ना टाइम सेविंग और रिवीजन बहुत भलो भाबरे हे पारुची। ता सहित आपण को बार बार आ किछि मेटल किना पड़िबो गोटे बही रे सब जिंस भलो अछि। आ ओडिशा कैप्सूल हैंड नोट रो गोटे फीचर्स चारटा फीचर इंपोर्टेंट कया गले आपण इमेजेस और इन्फोग्राफिक्स बहुत बढ़िया भाबरे अछि। जेमति आपण गोटे जहा गोटे इमेज रहला ताको बहुत भलो भाबे से दर्शाई छथि जे गोटे एक्यूरेट फैक्ट्स अछि माने कोन पर केमति कोन आसला कोन पर केमति कोन आसला से बहुत भलो भाबे दिछथि। एग्जाम हॉल डिमांड कोन जो जिंस रखी छथि सेठी एग्जाम हॉल ए जिंस बहुत थोर पडितबल से माने गोटे सोची दिछन ता हम बार बार तो रिवीजन करिवार अछि। तबरे मेमोरी बूस्टर माने आपण ए जो गोटे मनकर सेंसस गोटे डेमोग्राफिक पिक्चर देले सेतेरे कोन कोन पॉइंट बहुत जिन बाहर ताको हमको मन रखे पड़ो लाइक आप माइंड मैप बढ़िया से कर तेणु बहीटी बहुत बढ़िया अच्छी। ता सहित आप OSSC सिलेबस ओडिशा इकोनॉमी, ओडिशा हिस्ट्री, ओडिशा ज्योग्राफी, ओडिशा हेरिटेज एंड कल्चर 10th क्लास स्टैंडर्ड देइछन। तेणु ए जिंस हमेशा 10th क्लास स्टैंडर्ड देइ देइछन किंतु जो माने क्वेश्चन सेटअप करिवे से माने एक्चुअली टिके प्रोफेसर लेवल ला थांती हला से माने उत्कल यूनिवर्सिटी, रेवेन्सा यूनिवर्सिटी, आपनकर बीजेपी कॉलेज एवडा टिके लेवल से लेक्चर माने बननांती हला। तेणु से मन को जहाँ आसो से क्वेश्चन बनइबे न कि से देखिए 10th स्टैंडर्ड कौन आसो बोली हला। तेणु से बहुत जिन पचारि पाते क्वेश्चन। तेणु आम जो देखा यार कंटेंट लिस्टा कह गला आपण 34टा चैप्टर है डेमोग्राफिक प्रोफाइल ओडिशा प्लस बेसिक इनफॉरमेशन को जदि कहले 92 पेज टोटल 35टा चैप्टर अवेलेबल अच्छी। आ गोटे गोटे चैप्टर सब पूरा ठीक पशुची जेमती सिलेबस आपनकर देइची हला। सेकंड कहया को गले आपनकर कोन ना मु आपनको एक कंटेंट बहुत कंटेंट फ्री रे पढ़े देइची हला। जेमती मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ ओडिशा एटा पढ़े देइची, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़े देइची, एनिमल हस्बेंडरी ओडिशा एटा पढ़े देइची, कम्युनिकेशन इन सिनेमा ओडिशा एटा पढ़ाई छी, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल ओडिशा पढ़ाई जाई छी, एजुकेशन हेल्थ सेक्टर इन ओडिशा एटा पढ़ाई जाई छी एवं ओडिशा बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ाई देई छी। आ जेति कि बाकी रहला कि चैप्टर सेटा सब पेड अछि माने कहया गले सब जाक चैप्टर उडा पाखाबे 20 ରୁ 25 मिनिट कि 40 मिनिट भीतर बहुत चेष्टा कराई कि ताको पूरा डिटेल रे बुझे कि सारची माने हला। देखंदो एटी पूरा आपण जो देखिबे टोटल सब चैप्टर को मिसले 15 घंटा रो वीडियो माने 15 घंटा रे आपण को पूरा चैप्टर सर जिवो आपण पूरा मास्टर हे जिवे ओडिसा जिकरे कोनोसी भी आपण गोटे मार्क कटिबनी हला काई ना एते डिटेल से बरे डिटेल देइची सब जिंस पैक्सा देइची। सेकंड कथा करना हम बाखरे सब चैप्टर रो वीडियो अवेलेबल अछि हला। तेणु आम कौन कर फ्री सर्विस भी देचु किछि पेड सर्विस भी आम रखीचु। देखो जदि आप पेड सर्विस ना पाई जाउछन आपण 50% आपण को एडवांस आपणकर एबे रहउची एडवांस जो मन पेमेंट करजनी 50% डिस्काउंट रहउची। समरी नोट माने आपण चैप्टर सरीबो जो दिन वीडियो देखिले आपण संगे संगे आपण समरी नोट मिल जिवो ताको पढि देबे आपण बेस किछ पढिया दरकार नै। डेली 12 टाइम MCQ 35 डेज माने 420 टा क्वेश्चन इंपोर्टेंट बेसिक क्वेश्चन जोटा पढुची परीक्षा रे से लेवल क्वेश्चन हम दोचु। ओडिशा 360 डिग्री ई बुक गोटे फ्री रे आपण दोचु हला। सेते आपणकर सेते सब जिंस रहिची जोटार कि मार्केट कॉस्ट एक्चुअली कहया गले 50 रुपीस बट एटा फ्री कॉस्ट मिलुची। 35 वीडियो प्राइवेट YouTube चैनल रे हम आपण को अपलोड कर दोचु। सेटा प्राइवेट रहबो आपण को जो माने एटा परचेज करिवे सेही मान को मेल आईडी ही एक्सेस करि परिबो हला। जो माने परचेज करिवे से मान को मेल आईडी ही से वीडियो एक्सेस कर परिबो, फ्री वाला करि परिबे नाही। तापर प्राइवेट टेलीग्राम चैनल आपण को मिलिबो न WhatsApp चैनल मिलिबो सेटा आपण क्विज डिस्कशन करा जिवो। आपण को टोटल प्राइस होची
पैंतीस टंका है 35 टंका माने गोटे छोट छुआ अफोर्ड कर एमती बहुत बड़ जिनस नुह सेकंड कथा 35 टंका नहीं कि मुझे बहुत बड़ लोक होनी कहीं एति परिश्रम करा पड़ू से बईटा फोटो उठाओ फोटो उठाई पीडीएफ बना पीडीएफ बना पारे विभिन्न सफ्टवेयर यूज करके बुझेब जड़े है बाकी रहा बुझे सारापर आपको क्विज दब एत जिन जड़े करुच्ची है तेणु भावतु भावी नि 35 चैप्टर आपको जदि आप मिलगला आप वीडियो मिलगला तो गोटे वीडियो प्राइस के पड़ा टंका पड़ा टंका तो आप अपलोड करेंगे है तेणु मुझे बहुत जिन किसी कहूनी है देखो ये आपंकर पाखापाखि जोटा मुझे 7 घंटार वीडियो छाड़ी बहुत गुड़िए फ्री चैप्टर भी अच्छी पेड चैप्टर भी अच्छी जो मैंने नहीं पेड चैप्टर पेड फ्री सब देख पार्टी है आपण जो चाहिए निश्चित भाव एटा एक्सेस करें मात्र 35 टंका आपण भावतु जे ओएसएससी कम आसो अपकमिंग जी रिक्रुटमेंट आसो गवर्नमेंट सब जगह ओडिशा निश्चित भाव पड़ो 35 टंका इज नॉट ए वेरी बिग डील आप गोटे एवं बाहर मोमो खाई कि गुपचुप खाई कि जहाँ खाई आप 35 टंकार भी अधिक खर्च हो तेणु 35 टंका इज नॉट ए बिग डील आपने क्यूआर कोड स्कान करके 9937190244 नंबर मत व्हाट्सएप करेंगे व्हाट्सएप कले मुझे डिटेल्स क्रॉस चेक कलापर आपण मेल आईडी मांगी आपको वीडियो एक्सेस दे देबी ओके आज वीडियो जदि आपन भल लागला निश्चित भाव आपण माने मते कमेंट सेक्शन जणबे आपन मतामत कोन थैंक यू सो मच क्वेश्चन ऑफ द डे रे पार्ट 2 रे थिला तार क्वेश्चन डाला इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर सेंटर स्टेट रिलेशंस मेंशन्ड पार्ट 4 पार्ट 11 पार्ट 10 पार्ट 12 अपन आंसर कौन हम पार्ट 11 ओके अब अपन देछि पार्ट 11 article 245 to 255 the central state relations are divided into three parts which are follows legislative relations article 245 to 255 administrative relations 256 to 263 and financial relations 268 to 293 okay question number 2 right to move freely throughout the territory of India is a fundamental right under dash of the Constitution of India article 24 21 14 or 19 answer apan D article 19 freedom to move freely article 19(1)(d) ensure the right to move freely throughout the territory of India citizens have the liberty to move within the country reside in any part of India and settle in any place of their choice okay question number 3 which are of the following articles promote equal justice and free legal aid for all citizens 39A 32A 43A or 48A answer apanakara A 39A okay Article 39A includes in Part 4 of the Indian Constitution provide an idea of equal justice and free legal aid for all citizens. Okay. Question number 4. Article dash of the Constitution of India gives the Election Commission the power to supervise elections to the Parliament and state legislatures. 314, 342, 324 or 341. Number answer C 324. Okay. Article 324 gives the Election Commission of India the power to supervise elections in the Parliament, President, Vice President and State Legislative Assembly in the country. Question number 5. Which article of the Constitution of India talks about the provisions for impeachment of the President of India? Article 51, 61, 54, 63. Answer B 61. कौन कहूची Article 61 Constitution of India 1951 when the president is to be impeached for a violation of the constitution the charge shall be preferred by the either house of the parliament such a resolution has been passed by the majority of not less than 2/3 of the total membership of the house okay question number 6 which article of the Constitution of India provides that each Indian state will have a governor article 152 153 151 or 154 answer apan gonna be 153
Article 153 of the Constitution of India states that each state in India will have a governor. It also allows the same person to be appointed as governor for more than one state. Okay. Question number 7. The act of the Constitution of India deals with emergency due to war, externalization, or armed rebellion. Article 350, 352, 347, or 269. Answer about B, Article 352. Explanation goes under Article 352, the President can declare a national emergency when the security of India or a part of it is threatened by a war or external aggression or armed rebellion. When a national emergency is declared on the grounds of war or external aggression, it is known as external emergency. Question number 8. The powers, privileges and immunities of either the House of the Parliament and its committees and members have mainly been laid down in Article Dash of the Constitution of India 115, 107, 105, 102. Answer of C 105. The powers, privileges and immunities of either the House of the Parliament and of the committees and the members have mainly been laid down in Article 105 of the Constitution of India. Okay. Question number 9. Which article of the Constitution of India provisions for reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribes in the House of the People? Article 352, 321, 330 or 335. Answer of C. Article 330. Okay, the Article 330 of the Indian Constitution of India reserves a seat for scheduled castes, SCs and scheduled tribes, STs, in the House of the People. Question number 10. Which of the following articles of the Constitution of India is associated with the election of the President of India? Article 103, 78, 74 or 54. Answer of D. Article 54. Okay. Article 54 of the Indian Constitution states that the President shall be elected by the members of an electoral college system consisting of the elected members of the both houses of Parliament and the elected members of the Legislative Assembly of the number 11. Which of the following articles of the Indian Constitution provides for the appointment of a finance commission? Article 300, 290, 320 or 280. Answer option D 280. The Finance Commission is constituted by the President under Article 280 of the Constitution mainly to give its recommendations on distribution of tax revenues between the Union and the state and among the states themselves. Okay. Question number 12. Which of the following articles of the Constitution of India is related to the system of election of the President? Article 55, 61, 65 or 51. Answer A 55. Okay. As per the Article 55(3) of the Constitution of India, the election of the President shall be held in accordance with the system of proportional representation by the means of the single transferable vote, and voting at the such election shall be paid by secret ballot. Okay. Article 65. The Vice President to be act on the President or on discharge of his function during the casual vacancies in the office. Okay. Question number 13. Under Article Dash of the Constitution of India, the quorum of the Constitution, a setting of the House, is 1/10 of the total number of members of the House. 100, 101, 102 or 103. Answer A 100. According to the Constitution of India, Article 100 states that the quorum of constitute a setting of the House 1/10 of the total members of the House. Question number 14. The judges of the Supreme Court are appointed by the President under Article Dash of the Constitution of India 217, 124, 2, 224, 1 or 21. Answer of B 124 or 2. Okay. The judges of the Supreme Court are appointed by the President under Article 124(2) of the Constitution of India. Okay. Question number 15. Which article of the Indian Constitution deals with the discrimination against any Indian citizen on various grounds? Article 11, 19, 13 or 15. Answer D. Article 15. Okay. Article 15. Constitution of India 1951. The
States shall not discriminate against any citizen on grounds only for religion, race, caste, sex, place of birth, or any of the name. Okay. Question number 16. How many schedules are there in the Indian Constitution? 14, 12, 11, or 13? Answer आपनकर B 12. Present, the Constitution of India has 12 schedules, 25 parts, and 448 articles. There are 103 amendments have been made in the Indian Constitution so far. Okay. Question number 17. In which article of the Indian Constitution the eradication of untouchability has been mentioned? Article 16, 21, 25, or 17? Answer आपनकर D 17. Article 17 of the Indian Constitution abolished untouchability, forbade its practice in any form, and made enforcement of any disability arising out of the untouchability of an offence punishable in accordance with law. Okay. Question number 9. Which of the following article is related to Jammu and Kashmir state of India? Okay. Article 378, 374, 370, or 366? Answer आपन C 370. Okay. या तो बहुत कॉमन क्वेश्चन सबले पड़छि. आर्टिकल 370 में कोर्स पूरा फिल्म देख परंती तो आपण विषय जानि देबो. आर्टिकल 370 of the Constitution of India has given a special announcement status to Jammu Kashmir within the Indian Union. Okay. Question number 19. Which article in the Indian Constitution state about the fundamental duties? Article 31C, 21A, Article 15, Article 51A. Answer of D, Article 51A. Okay. Article 51A contains the part B of A of the Constitution dealing with the fundamental duty. Okay. Question number 20. The subject of sports comes under which list Indian Constitution? Union list, states list, residuary list, or concurrent list? Answer B state list. Okay. The subject of sports comes under the state list of the Indian Constitution. The 7th schedule of the Constitution of India is about the subject of the distribution of legislative power between the union and state that are defined under several. हेलो डियर फ्रेंड्स, बिजनेस हेल्पलाइन चैनल को आपण मान को बहुत बहुत स्वागत. आज हम देखिबा आर्यन स्टेट स्पेशल ओडिशा कैप्सूल जो थे कि कंप्लीट नोट्स ऑफ ओडिशा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, हेरिटेज एंड कल्चर रही छी. आपण को पई एडा जदी आपण माने जदी OSSC, OSSSC, OPSC, OUSSC टीचिंग जे कोनोसी एग्जाम पे प्रिपेयर करछन निश्चित भाबरे आपण मान को हेल्पफुल रहइबो. ता सहित आपण चैनल को प्रथमे सब्सक्राइब करि नियंतु काइना एमिति कंटेंट आपण को बहुत बहुत आपण को फ्री रे मिलुची. चलो तो देखिबा ए बहिर गोटे भलो जिंस कोन अछि ना मेरिट बूस्टर कंटेंट से माने बनै चंदी प्रिपेयर करछन जो मान टॉपर एजुकेटर आ आपण को एथे भलो जिंस कोन ना टाइम सेविंग और रिवीजन बहुत भलो भाबरे हे परछि. ता सहित आपण को बार बार आ किछि मेटल कने पड़बनी गोटे बहिरे सब जिंस भलो अछि. आ ओडिशा कैप्सूल हैंड नोट रो गोटे फीचर्स चारटा फीचर इंपोर्टेंट कया गले आपण इमेजेस और इन्फोग्राफिक्स बहुत बढ़िया भाबरे अछि. जेमति आपण गोटे जहा गोटे इमेज रहला ताको बहुत भलो भाबे समान दर्शाई छथि. जे गोटे एक्यूरेट फैक्ट्स अछि माने कोन पर केमति कोन आसला कोन पर केमति कोन आसला से बहुत भलो भाबे दै छथि. एग्जाम हॉल डिमांड कोन जो जिंस रखी छथि सेठी एग्जाम हॉल ए जिंस बहुत थर पढि छथि. समान गोटे सूची दै छथि त हम बार बार तो रिवीजन करिवार अछि. तबरे मेमोरी बूस्टर माने आपनकर ए जो गोटे मनकर सेंसस गोटे डेमोग्राफिक पिक्चर देले सेतेरे कोन कोन पॉइंट बहुत जिन बाहर ताको हमको मन रखे पड़ो लाइक आप माइंड मैप बढ़िया से कर तेणु बहीटी बहुत बढ़िया अच्छी. ता सहित आप OSSC सिलेबस ओडिशा इकोनॉमी, ओडिशा हिस्ट्री, ओडिशा ज्योग्राफी, ओडिशा हेरिटेज एंड कल्चर 10th क्लास स्टैंडर्ड देइछन. तेणु ए जिनस हम 10th क्लास स्टैंडर्ड देइ देइछन किंतु जो माने क्वेश्चन सेटअप करिवे से माने एक्चुअली टिके प्रोफेसर लेवल थांती हला. से माने उत्कल यूनिवर्सिटी, रेवेन्सा यूनिवर्सिटी, आपनकर बीजेपी कॉलेज एवडा टिके लेवल से लेक्चर माने बननांती हला. तेणु से मानकर मन को जहाँ आसीबो से माने क्वेश्चन बनेबे न कि से माने देखिबे जे 10th स्टैंडर्ड कोन आसीबो बोली हला. तेणु से माने बहुत जिंस पचारि पांते क्वेश्चन. तेणु आमे जे देखिबा यार कंटेंट लिस्टा कया गले आपन को 34 टा चैप्टर हला. डेमोग्राफिक प्रोफाइल ओडिशा प्लस बेसिक इन्फॉर्मेशन को जदी कहले 92 पेज टोटल 35 टा चैप्टर अवेलेबल अछि. आ गोटे गोटे चैप्टर सब पूरा
ठीक पशुची जेमती सिलेबस आपनकर देइछि हला। सेकंड कहया को गले आपनकर कोन ना मु आपनको एक कंटेंट रो बहुत कंटेंट फ्री रे पढ़े देइछि हला। जेमती मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ ओडिशा एटा पढ़े देइछि, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़े देइछि, एनिमल हस्बेंडरी ओडिशा एटा पढ़े देइछि, कम्युनिकेशन इन सिनेमा ओडिशा एटा पढ़ाई छि, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल ऑफ ओडिशा पढ़ाई जाई छि, एजुकेशन हेल्थ सेक्टर इन ओडिशा एटा पढ़ाई जाई छि एवं ओडिशा बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ाई दै छि। आ जेति कि बाकी रो लखि चैप्टर सेटा सब पेड रे अछि, माने कहया गले सब जाक चैप्टर उडा पाखाबे 20 रो 25 मिनिट की 40 मिनिट भीतर बहुत चेष्टा कराई कि ताको पूरा डिटेल रे बुझे कि सारची माने हला। देखो ये पूरा आप जो देखिए टोटाल सब चैप्टर को मिसले 15 घंटार वीडियो, माने 15 घंटे आपन पूरा चैप्टर सरजी आपन पूरा मास्टर हो जिवे ओडिसा जिकर कौन भी आपन गोटे मार्क कटबनी है कहीं एत डिटेल से बरे डिटेल देछि सब जिनस पैक्सा देछि। सेकंड कथा करना आम पाखे सब चैप्टर वीडियो अवेलेबल अच्छी है, तेणु आम कौन कर फ्री सर्विस भी देचु किछि पेड सर्विस भी आम रखीचु। देखो जदि आप पेड सर्विस ना पाई जाऊँगी आपड़ 50% आपन को एडवांस आपणकर ए रोचे एडवांस जो मैंने पेमेंट कर 50% डिस्काउंट रोचे। समरी नोट माने अपन चैप्टर सरीबो जो दिन वीडियो देखिले अपन संगे संगे अपन समरी नोट मिल जिवो ताको पढि देबे अपन बेस किछ पढिया दरकार नै। डेली 12 टा एमसीक्यू 35 डेज माने 420 टा क्वेश्चन इंपोर्टेंट बेसिक क्वेश्चन जोटा पढुची परीक्षा रे से लेवल क्वेश्चन हम दोचु। ओडिसा 360 डिग्री ई बुक गोटे फ्री आपन दोचु हला, सेते आपनकर सेते सब जिंस रहिछि जोटार कि मार्केट कॉस्ट एक्चुअली कहया गले 50 रुपीस पर डाटा फ्री पोस्ट मिलछि। 35 वीडियो प्राइवेट यूट्यूब चैनल रे हम आपन को अपलोड कर दोचु, सेटा प्राइवेट रहइबो। आपन को जो माने एटा परचेज करिवे सेही मान को मेल आईडी ही एक्सेस करि परिबो हला। जो माने परचेज करिवे से मान को मेल आईडी ही से वीडियो एक्सेस कर परिबो, फ्री वाला करि परिबे नाही। तापर प्राइवेट टेलीग्राम चैनल आपन को मिलिबो न व्हाट्सएप चैनल मिलिबो, सेटा आपन क्विज डिस्कशन करा जिवो। आपन को टोटल प्राइस होची 35 टंका हला। 35 टंका माने गोटे छोट छुआ मध्य एटा अफोर्ड करि परिबो, एमिति बहुत बड़ जिंस नुह। सेकंड कथा 35 टंका नै कि मु बहुत बड़ लोक हो जिबिनी, काने एति परिश्रम करिया पडुचे से बईटा फोटो उठाई हला पर तापर ताको पीडीएफ बना जिवो। पीडीएफ बना पले विभिन्न सॉफ्टवेयर यूज करिके ताको बुझेइबो जणे हला। तापर बाकी रहला तापन बुझे साइला पर आपन को क्विज दबो, एते जिंस जणा करूची हला। कारण भाबंतु आपन भाबिनो तो 35 चैप्टर रो आपन को जति आपन मिली गला आपन वीडियो मिली गला त गोटे वीडियो रो प्राइस केते पइला टंकाटे त आपन अपलोड कर परिबे हला। तेनु मु बहुत जिंस किसी कहूनी हला। देखंतु एठी आपनकर पका पके जोडा मु 7 घंटा वीडियो छाडी से बहुत गुडी फ्री चैप्टर भी अछि पेड चैप्टर भी अछि। जो माने नै छै से माने पेड चैप्टर पेड फ्री सब देख परचंदी हला। आ आपण मान जो चाहेबे निश्चित भाबरे एटाको एक्सेस करि परिबे मात्र 35 टंका। आपण भाबंतु जे एटा आपण गले ओएसएससी जिले काम रे आसीबो, अपकमिंग जेति रिक्रूटमेंट आसीबो गवर्नमेंट रो सब जगह रे आपण ओडिसा निश्चित भाबरे पड़िबो। 35 टंका इज नॉट अ वेरी बिग डील। आपण गोटे एबे जाय कि बाहर मोमो खाइले कि गुपचुप खाइले कि जा खाइले म्हणजे आपण 35 टंका रो भी अधिक खर्च होय। तनो 35 टंका इज नॉट अ बिग डील। आपण माने क्यूआर कोड स्कैन करि मते 8993719044 नंबर मते व्हाट्सएप करिवे। व्हाट्सएप करले मु आपण मान को डिटेल्स क्रॉस चेक कला पर आपण मान को आपण मेल आईडी मागी आपण को वीडियो एक्सेस दे देबी। ओके, आज रो वीडियो जति आपण भल लागला निश्चित नंबर आपण माने मते कमेंट सेक्शन जणिबे आपण मतामत कोन। थैंक यू सो मच। One, which schedule of Indian Constitution contains the provision on Panchayat Raj institution? 10th schedule, 11th, 9th or 12th? Answer of apanakara B, 11th schedule. Explanation goes 11th schedule of an Indian Constitution contain the provisions on Panchayat Raj institution. The 73rd Amendment 1992 added a new part 9th to the Constitution titled the Panchayatas, covering the provision from Article 343 to 343O and a new 11th schedule covering 29 subjects within the functioning of the panchayatas. Okay, question number 2, which of the following article is related to right to freedom of religion in the Indian Constitution? Article 20, 30, 15 or 25? Answer of D, 25.
Article 25-28 of the Indian Constitution cover the right to freedom of religion. These articles are found in Part 3 of the Constitution. Okay. Question number 3. The 6th schedule of the Indian Constitution doesn't exercise its control to the tribal areas. Which of the following state? Manipur, Tripura, Assam, Meghalaya. Answer of A. Manipur. Okay. On the 16th schedule of the Indian Constitution does not exercise control to the tribal areas of Manipur. Question number 4. Which part of the Indian Constitution contains the provision on the Union territories? Part B double I, Part B triple I, Part IX, Part IXB. Answer of Part B triple I. Okay. Question number 5. Which of the article of Indian Constitution tells about the election of the president? Article 51A, 54, 51 or 53? Answer B. 54. Explanation hoji Article 54 of the Indian Constitution talks about the election of president. Okay. Question number 6. Which article of the Indian Constitution gives the guarantee for the protection of life and individual freedom? Article 21A, 20, 21 or 22. Answer C. Article 21. Okay. Article 21 of the Indian Constitution gives guarantees for the protection of life and individual freedom. Question number 7. Which part was added in the Constitution by the 73rd Constitution Act? Part IX, Part IXB, Part IXA, Part X. Answer A. Part IX. The 73rd Amendment 1992 added a new Part IX to the Constitution titled the Panchayatas, covering the provision from Article 243 to 243O and a new 11th schedule covering 29 subjects within the functions of the Panchayatas. Okay. Question number 8. Under which article every citizen of India has given the right to health? Article 19, Article 20, 21A or 20? Answer D. Article 21. Union of India AIR 1984 SC 812, the Supreme Court held that although the PSP are not binding obligations but hold preservative value, yet they should be duly implemented by the state. Further, the court held that dignity and health fall within the ambit of the life and liberty under the Article 21. Okay. Question number 9. Which part of the Indian Constitution enlists the fundamental rights? Part 4, Part 5, Part 3 or Part 2? So, Part 3. The Part C of the Indian Constitution enlists the fundamental right guaranteed to the citizen of the country. Question number 10. Agriculture as a subject is included in which list of the Constitution? Statutory power, union list, state list, concurrent list. Answer of C. State list. 14.20.1 in the Indian Constitution, agriculture has been placed on entry 14 in the state list along with the several ancillary matters, while some agriculture related items have been included in the union list and the concurrent list. 11. According to which article of the Indian Constitution the president rule is implemented in a state? Article 368, 356, 350 or 325. Answer B. 356. Okay. Article 356 of the Indian Constitution talks about the state emergency, also called as president rule. Emergency can be declared in any state of India under the Article 356 on the recommendation of the governor of the state in the case of failure of the state's machinery. Okay. Question number 12. Which article of the Indian Constitution states that the law declared by the Supreme Court is to be binding all courts within the territory of India? Article 127, 133, 147 or 144? So, D. 141. Okay. Article 141 of the Indian Constitution states that the law declared by the Supreme Court shall be binding in all courts within the territory of India. Question number 13. Under which article of the Constitution of India can members of the Anglo-Indian community be nominated to the Lok Sabha by the President? 326, 333, 342, 331. Answer D. 331.
Article 331 representation of the Anglo-Indian community in the Lok Sabha. It says that the president may appoint 2 members from the Anglo-Indian community to Lok Sabha. Okay, question number 14. In India, which of the following article of the Constitution of India provide for the formation of a new state? Article 1, 3, 2 or 9. Answer will be Article 3. Okay. Question number 15. The powers, privilege and immunity of either House, Parliament and its committee and members have mainly been laid down in Article 115, 107, 105 or 102. So, see 105. The powers, privilege and immunity of the either House of the Indian Parliament and its members and committee laid down in Article 105 of the Indian Constitution. Question number 16. Matters which are not pointed in order can be raised by the way of special motions under rule dash of Lok Sabha 377, 302, 223, 214. And so, 377. Matters which are not pointed of order can be raised by the way of special motion under 377 of Lok Sabha. Question number 17. Which article of the Constitution of India provision for the reservation of the seat of the scheduled caste and scheduled tribes in the House of the People? Article 325, 321, 330, 335. And so we are C 333. And so C 330. Okay. Article 330 of the Constitution of India reserves seats in the House of the People of the scheduled caste and scheduled tribe. This article is part of the Part XVI, which is titled Special Provision Relating to Certain Classes. Question number 18. Which of the following article of the Constitution of the Indian associated with the election of the President of India? Article 103, Article 78, Article 74, Article 54. This is D 54. Article 54 of the Indian Constitution states the Indian President shall be elected by the members of an electoral college consisting of the elected members of the both houses of parliament and the elected members of the legislative assembly of the state. Question number 19. Which of the following article of the Indian Constitution provide for the appointment of a finance commission? Article 300, 290, 320, 280. Answer from D 280. Article 280 of the Indian Constitution provide for appointment of finance commission. Last question. Which of the following schedule of the Constitution of India contain the format of oaths to be taken by the different constitutional functionaries? 4th schedule, 5th, 3rd or 2nd? Answer C 3rd schedule. 3rd schedule the Indian Constitution presently there are 12 schedules. The 3rd schedule consists of forms of oath affirmation. हेलो डियर फ्रेंड्स बिजनेस हेल्पलाइन चैनल को आपण मन को बहुत बहुत स्वागत। आज हम देखिबा आर्यंत स्टेट स्पेशल ओडिशा कैप्सूल जोते कि कंप्लीट नोट्स ऑफ ओडिशा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक हेरिटेज एंड कल्चर रही आपण को पई एटा जदी आपण माने जदी OSSC OSSSC OPSC OUSSC टीचिंग जेकोसी एग्जाम पे प्रिपेयर करछन निश्चित भाव आपण मन को हेल्पफुल रहइबो। ता सहित आपण चैनल को प्रथमे सब्सक्राइब करि नियंतु काइना एमिति कंटेंट आपण को बहुत बहुत आपण को फ्री रे मिलुची। चलो देखिबा ए बही रे गोटे भलो जिंस कोन अछि ना मेरिट बूस्टर कंटेंट से माने बनै छथि प्रिपेयर करछन जो मान टॉपर एजुकेटर आ आपण को एथे भलो जिंस कोन ना टाइम सेविंग और रिवीजन बहुत भलो भाव रे हे परछि। ता सहित आपण को बार बार आ किछि मेटल किना पड़बो गोटे बही रे सब जिंस भलो अछि। आ ओडिशा कैप्सूल हैंड नोट रो गोटे फीचर्स चारटा फीचर इंपोर्टेंट कया गले आपण इमेजेस और इन्फोग्राफिक्स बहुत बढ़िया भाव में अच्छी जमती आप गोटे जहाँ गोटे इमेज रहा बहुत भल भाव से दर्शाई से गोटे आकुरेट फैक्ट्स अच्छी माने कौन पर केमती कौन आसला कौन पर केमती कौन आसला से बहुत भल भाव देती। एग्जाम हॉल डिमांड कौन जो जिनस रखी से एग्जाम हॉल ये जिन बहुत थर पड़ी से गोटे सूची देते आम बार बार रिविजन करार अच्छी। मेमोरी बुस्टर माने आपंकर ये जो गोटे मन सेंसस गोटे डेमोग्राफिक पिक्चर देले से कौन कौन पॉइंट बहुत जिन बाहर हमको मन रखा पड़ो लाइक आप माइंड मैप बढ़िया से कर तेणु बहीटी बहुत बढ़िया अच्छी। सहित आप OSSC सिलेबस ओडिशा इकोनॉमी ओडिशा हिस्ट्री ओडिशा ज्योग्राफी ओडिशा हेरिटेज एंड कल्चर 10th क्लास स्टैंडर्ड देते तेणु ये जिनस 10th क्लास स्टैंडर्ड देते किंतु जो मैंने क्वेश्चन सेटअप करेंगे से एक्चुअली टिके प्रोफेसर लेवल था उत्कल यूनिवर्सिटी रेवेन्सा यूनिवर्सिटी आपणकर बीजेपी
कॉलेज एगुड़ा टे लेवल से लेक्चर मैंने बनाती है तेणु से मुंड को जहाँ आसो से क्वेश्चन बनइबे न कि देखिए 10th स्टैंडर्ड कौन आसो बोली तेणु से बहुत जिन पचारि पाते क्वेश्चन तेणु आम जो देखा यार कंटेंट लिस्टा कह गले आप 34टा चैप्टर है डेमोग्राफिक प्रोफाइल ओडिशा प्लस बेसिक इनफॉरमेशन को जब कहले 92 पेज टोटल 35टा चैप्टर अवेलेबल अच्छी आ गोटे गोटे चैप्टर सब पूरा ठीक पशुची जमी सिलेबस आपंकर है सेकेंड कह गले आपंकर कौन ना मुझे को एक कंटेंट रू बहुत कंटेंट फ्री रे पढ़े देछि है जमी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ ओडिशा एटा पढ़े देछि नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़े देछि एनिमल हजबेंडरी ओडिशा एटा पढ़े देछि कम्युनिकेशन इन सिनेमा ओडिशा एटा पढ़ाई डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल ऑफ ओडिशा पढ़ाई जाइए एजुकेशन हेल्थ सेक्टर इन ओडिशा एटा पढ़ाई जाइए ओडिशा बेसिक इनफॉरमेशन पढ़े देछि आ जेतिकी बाकी रहला कि चैप्टर सेटा सब पेड अच्छी माने कह गले सब जाक चैप्टर गुड़ा पाखापी 20 ରୁ 25 मिनट कि 40 मिनट भितर बहुत चेष्टा कराई पूरा डिटेल रे बुझे सारी मैंने देखो ये पूरा आप जो देखिए टोटाल सब चैप्टर को मिसले 15 घंटार वीडियो माने 15 घंटे आपन पूरा चैप्टर सरजी आप पूरा मास्टर हो ओडिशा जिले कौन भी आप गोटे मार्क कटबनी है कहीं एत डिटेल से बरे डिटेल देछि सब जिन पैसा देछि सेकंड कथा करना आम पाखे सब चैप्टर वीडियो अवेलेबल अच्छी है तेणु आम कौन कर फ्री सर्विस भी देचु किसी पेड सर्विस भी आम रखीचु देखो जदि आप पेड सर्विस ना पाई जाऊँगी आप 50% आपन को एडवांस आपणकर ए रोचे एडवांस जो मैंने पेमेंट कर 50% डिस्काउंट रोचे समरी नोट माने अपन चैप्टर सर जो दिन वीडियो देखिले अपन संगे संगे आप समरी नोट मिल जाए पढ़ीदेवे आप पढ़ा दरकार नहीं डेली 12 टाइम सीक्यू 35 डेज माने 420टा क्वेश्चन इंपोर्टेंट बेसिक क्वेश्चन जोटा पढ़ुची परीक्षा से लेवल क्वेश्चन आम दौचु ओडिशा 360 डिग्री इ बुक गोटे फ्री आपको दौचु है से सब जिन रही जोटार कि मार्केट कॉस्ट एक्चुअली कह गले 50 रुपीज बट एटा फ्री कॉस्ट मिलूँ 35 वीडियो प्राइवेट यूट्यूब चैनल रे आम आपको अपलोड कर दौचु सेटा प्राइवेट रहिबो आपन को जो माने एटा परचेज करिवे सेही मान को मेल आईडी ही एक्सेस करि परिबो हला जो माने परचेज करिवे से मान को मेल आईडी ही से वीडियो एक्सेस कर परिबो फ्री वाला करि परिबे नाही तापर प्राइवेट टेलीग्राम चैनल आपन को मिलिबो न व्हाट्सएप चैनल मिलिबो सेटा आपन क्विज डिस्कशन करा जिवो आपन को टोटल प्राइस होची 35 टंका है 35 टंका माने गोटे छोट छुआ अफोर्ड कर एमती बहुत बड़ जिन नुह सेकेंड कथा 35 टंका नहीं कि मुझे बहुत बड़ लोक होजीविनी कहीं एति परिश्रम करा पड़ू से बईटा फोटो उठाए पीडीएफ बना पीडीएफ बना पाले विभिन्न सफ्टवेयर यूज करके बुझेब जड़े है बाकी रहा बुझे सारा आपको क्विज दब एत जिन जड़े करुच्ची है तेनाली भावतु आप भावी नि 35 चैप्टर आपको जदि आप मिलगला आप वीडियो मिलगला तो गोटे वीडियो प्राइस के पड़ा टंका तो आप अपलोड करेंगे है तेणु मुझे बहुत जिन किसी कहूनी है देखो ये आपंकर पाखापाखि जोटा मुझे 7 घंटार वीडियो छाड़ी बहुत गुड़िए फ्री चैप्टर भी अच्छी पेड चैप्टर भी अच्छी जो मैंने नहीं पेड चैप्टर पेड फ्री सब देख पार्टी है आपण जो चाहिए निश्चित भाव को एक्सेस करेंगे मात्र 35 टंका आप भावतु आप ओएसएससी जिले कम आसो अपकमिंग जी रिक्रुटमेंट आसो गवर्नमेंट सब जगह ओडिशा निश्चित भाव पड़ो 35 टंका इज नॉट ए वेरी बिग डील आप गोटे एवं बाहर मोमो खाई कि गुपचुप खाई कि जहाँ खाई आप 35 टंकार भी अधिक खर्च हो तेणु 35 टंका इज नॉट ए बिग डील आप क्यूआर कोड स्कान कर 9937190244 नंबर मत व्हाट्सएप करेंगे व्हाट्सएप कले मुझे डिटेल्स क्रॉस चेक कला परे आपण को मेल आईडी मांगी आपण को वीडियो एक्सेस दे देबी ओके आज वीडियो जदि आपण भल लागला निश्चित नंबर आपण माने मते कमेंट सेक्शन जणिबे आपण मतामत कोन थैंक यू सो मच Amnesty International organization volunteer campaign for human rights all over the world, human values worldwide, human evaluation studies, human free education rights. Answer of अपन करें human rights all over the world. Okay. Question number 2. Before the independence of India, Dadar Nagar Haveli were under the administrative control of English, French, Portuguese, or Afghans.
आंसर आपनकर सी पोर्तुगीज। ओके लिखिए दादानगर हवेली वेयर स्मॉल undependent Portuguese overseas territory, part of the Portuguese India since 1779. The territory were enclaves without any access to the sea, administered by the Portuguese governor of the district of the Damao. Okay. Question number 3 jiba. Who among the following is constitutionally empowered to make the changes in the scheduled areas? Supreme Court, High Court, Prime Minister of India, President of India. Answer upon the President of India. Okay. The President is empowered to declare an area to be a scheduled area, or the President can increase or decrease its area, alter its boundary lines in the consultation with the governor of the state concerned. Okay. Question number 4. Fundamental duties were added in the Constitution of the India under the leadership of Prime Minister of India. Narasimha Rao, Charan Singh, Indira Gandhi, Lal Bahadur Shastri. Answer upon say Indira Gandhi. It was added to the Constitution of India under the leadership of Indira Gandhi. The fundamental duty of citizens were added to the Constitution by the 42nd Amendment in 1946 upon the recommendation of the Swarna Singh committee that was constituted by the government. Question number 5. How are the members of the parliament replaced in case of the death and resignation? Through by election, through general election, both none of the answer upon through by election. Okay, the President of India names an individual as the Prime Minister who is either the head of the gathering which hold a majority share of the seat in the Lok Sabha, or an individual who can win the certainty of the Lok Sabha by the picking of the help of the other ideological groups. Any remaining minister are named by the President on the council of the Prime Minister. Okay. Question number 6. Which of the following authorities is or are competent to issue rights regarding the enforcement of fundamental rights? President, Supreme Court and High Court, Parliament. Answer upon C. Supreme Court and High Court. The Constitution empowers the Supreme Court and the High Court with the duty to safeguard the fundamental rights of the citizen. The Supreme Court under the Article 32 and the High Court under the Article 2 to 6 of the Constitution can issue rights for the protection of fundamental rights. Question number 7. Which provision of the Constitution empowers to the central government to provide reservation for the weaker section of society in jobs and educational institution? Article 14, 16, 46 or 19. Answer of B 16. The Constitution was amended by the Constitution 77 Amendment Act 1995, and a new clause 4A was inserted to pay Article 16 to enable the government to provide reservation in promotion. Okay. Question number 8. On whose recommendations were fundamental duty included in the Indian Constitution? Santhanam Committee, Swarna Singh Committee, Saha Commission, Administrative Reforms Commission. Answer apanakara B Swarna Singh Committee. Recently quite. Question number 19. Which state government has reserved 75% jobs for local residents in the private sector? Bihar, Haryana, Tamil Nadu, Punjab. Answer apanakara B Haryana. Haryana's most touted legislation providing 75% reservation to the state domiciles for private sector jobs is still to be implemented in the state. Chandigarh, Haryana's most touted legislation same reason. Chandigarh, Haryana same reason tha. Okay. Question number 10. Which of the following high court has become the first high court in the country to set up justice clock? Gujarat High Court, Delhi, Rajasthan or Allahabad? Answer apanakara Gujarat High Court. Okay. The first High Court of India was established in Kolkata. It was formerly called the High Court of the Jurisdiction of Fort William. It was issued under the Indian High Court Act 1861. It was formally opened on 1st July 1862. Sir Barnes Peacock as its first Chief Justice of the Kolkata High Court. Justice Subarna Nath Pandit was the first Indian to assume office as a judge of the Kolkata High Court. Okay. एरा विभिन्न कोर्ट उपरे टिके बेसी आपन को एक्सप्लेनेशन को देइची जे कोर्ट रे कोन हेतिला बट एक्चुअल आंसर होची आपन कर सेटा आपन कोन गुजरात
High Court. Okay, clock. Sir. Question number 11. According to the directive principle of the state policy, up to what age children are expected to given free and compulsory education? 14, 15, 16 or 18? Answer होची 14. The state shall endeavour to provide within a period of 10 years from the commencement of this constitution for free and compulsory education for all the children until they complete the age of 14 years. Okay. Question number 12. Under which of the following pardoning power of the president the nature of punishment is mitigated? Commutation, avoidance, postponement, procrastination. Answer upon commutation. Okay. Kona Article 72 of the Constitution empowers the President to grant pardons to the person who have been tried and convicted at any offence. Question number 13. In which of the following presidential government is formed? Fixed term of office, no duplication of the executive among the numbers of legislature. Election of the president by popular vote. All of the above. Answer of all of the above. Okay. Question number 14. Which of the following states were formed after 1960? What was the correct sequence of their formation? Haryana, Sikkim, Nagaland or Meghalaya? Option दिया है अपन मन आंसर करंतु आंसर अब अपन को D 3 1 4 2 केमदी. In conclusion, the correct chronological order of the formation of the given state is Nagaland 1963, Haryana 1966, Meghalaya 1972, Sikkim 1975. Okay. Question number 15. Under Article 356, the president's rule can be imposed in a state. Normally, what maximum period? 1 year, 2 year, 3 year or 4 year? Answer अपना करो. C 4 year. Oh, sorry, 3 year. If the both houses of parliament have approved the proclamation imposing president's rule in the country, then it will continue for 6 months. It can be extended for a maximum period of 3 years, but the approval of the same is required every 6 months. Okay. Question number 16. Who among the following nominates person for the various parliamentary delegation sent to the foreign country? President of Rajya Sabha, Speaker of Lok Sabha, Prime Minister, President. Answer अपना B, Speaker of Lok Sabha. The Minister of Parliament Affairs nominates the member of the Parliament on various government delegation visiting abroad. Question number 17. If any questions arises as the age of the judge of the High Court of India, who decided it? By the Governor in consultation with the Chief Justice of the High Court, by the President in consultation with the Chief Justice of India, by the Chief Justice of India in consultation with the President, by the Chief Justice of India in consultation with the Governor. And so I want to be the President in consultation with the Chief Justice of India. Okay. এটা আপনার 14 নেবেন নিজে এটা ডিটেল লেখা আছে সেই জিনিসটাকে ঠিক আছে ডিটেল এলাবোরেট করা যাচ্ছে আর আর্টিকেল লেখা আছে 231 ওকে সেই জিনিস লেখা আছে क्वेश्चन नंबर 18 ଯିବା ଆମେ is it necessary to place the proclamation of the national emergency before the parliament for its approval within a month, within 6 months, within a year, within 2 months? Answer ଆପଣଙ୍କର A within a month. Okay. State of emergency refers to a period of governance that can be proclaimed by the President of India during the certain situation. National emergency can be declared on the basis of war, external aggression or armed rebellion. The Constitution employs the expression proclamation of emergency to denote an emergency of this type. A proclamation of the emergency must be placed before the parliamentary for approval within a month. Within a month. Okay. It must be approved by both the houses of parliament. Article 352 of the Constitution deals with the national emergency. Okay. Question number 19. What permission does the vote on account give to the union government? Permission to take public debt, permission to take loan from RBI, permission to provide grant to the states, permission to withdraw money from the consolidated fund of India for a specific period. Answer upon D. Permission to withdraw money from the consolidated fund of India for a specific period. Okay.
এটা পাশে সেম জিনিসটা লেখা আছে ডিটেলରେ କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି ଫୋଟ ଅନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି କନସେପ୍ଟ ଫଣ୍ଡ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ଡିଟେଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ PDF ପାଇଲେ ପଢ଼ିଥିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। Question number 20. The parliamentary committee to review the report of the Comptroller and Auditor General of India is Assessment Committee, Public Account Committee, Select Committee. None of the answer will be Public Accounts Committee. Okay. The function of the Public Account Committee is to examine the annual audit report of the Comptroller, Auditor General, CAG, which are laid before the Parliament of the President. Okay. हेलो डियर फ्रेंड्स, बिजनेस हेल्पलाइन चैनल को आपण मान को बहुत बहुत स्वागत। आज हमें देखिबा आर्यन स्टेट स्पेशल ओडिशा कैप्सूल जो कि कंप्लीट नोट्स ऑफ ओडिशा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, हेरिटेज एंड कल्चर रही आपण को पई एटा जदी आपण माने जदी OSSC, OSSSC, OPSC, OUSSC टीचिंग जेकोसी एग्जाम पे प्रिपेयर कर निश्चित भाव आपण मान हेल्पफुल रहिबो। ता सहित आपण चैनल को प्रथमे सब्सक्राइब कर नियंतु काईना एमिति कंटेंट आपण को बहुत बहुत आपण को फ्री रे मिलुची। चलନ୍ତୁ ଦେଖିବା ए बही रे गोटे भलो जिंस कोन अछि ना मेरिट बूस्टर कंटेंट से माने बनेइचंदी प्रिपेयर करछने जो मान टॉपर एजुकेटर आ आपनकर एथे भलो जिंस कोन ना टाइम सेविंग और रिवीजन बहुत भलो भाव रे हे परछि। ता सहित आपन को बार बार आ किछि मेटल किना पड़बनी गोटे बही रे सब जिंस भलो अछि। आ ओडिशा कैप्सूल हैंड नोट रो गोटे फीचर्स चारटा फीचर इंपोर्टेंट कया गले आपण इमेजेस और इन्फोग्राफिक्स बहुत बढ़िया भाव में अच्छी जमती आप गोटे जहाँ गोटे इमेज रहा बहुत भल भाव से दर्शे गोटे आकुरेट फैक्ट्स अच्छी माने कौन पर केमती कौन आसला कौन पर केमती कौन आसला से बहुत भल भाव देइछंती। एग्जाम हॉल डिमांड कौन जो जिनस रखी से एग्जाम हॉल ये जिन बहुत थर पड़ी से गोटे सूची देते तो बार बार रिविजन करार अच्छी। मेमोरी बुस्टर माने आपनकर ए जो गोटे मनकर सेंसस गोटे डेमोग्राफिक पिक्चर देले से कौन कौन पॉइंट बहुत जिन बाहर हमको मन रखा पड़ो लाइक आप माइंड मैप बढ़िया से कर तेणु बहीटी बहुत बढ़िया अच्छी। ता सहित आप OSSC सिलेबस ओडिशा इकोनॉमी, ओडिशा हिस्ट्री, ओडिशा ज्योग्राफी, ओडिशा हेरिटेज एंड कल्चर 10th क्लास स्टैंडर्ड देइछन्ते। तेणु ए जिनस हमेशा 10th क्लास स्टैंडर्ड देइ देइछन्ते किंतु जो माने क्वेश्चन सेटअप करिवे से माने एक्चुअली टिके प्रोफेसर लेवल थांती हला से माने उत्कल यूनिवर्सिटी, रेवेन्सा यूनिवर्सिटी, आपनकर बीजेपी कॉलेज एवडा टिके लेवल से लेक्चर माने बननांती हला। तेणु सेमानकर मन को जहाँ आसीबो सेमाने क्वेश्चन बनेबे न कि सेमाने देखिबे जे 10th स्टैंडर्ड कोन आसीबो बोली हला। तेणु सेमाने बहुत जिनस पचारि पाते क्वेश्चन। तेणु आम जो देखा यार कंटेंट लिस्टा कह गले आपण 34टा चैप्टर है डेमोग्राफिक प्रोफाइल ओडिशा प्लस बेसिक इनफॉरमेशन को जब कहले 92 पेज टोटल 35टा चैप्टर अवेलेबल अच्छी। आ गोटे गोटे चैप्टर सब पूरा ठीक पशुची जमी सिलेबस आपंकर है। सेकेंड कह गले आपंकर कौन ना मुझे को एक कंटेंट रू बहुत कंटेंट फ्री रे पढ़े देछि है। जमी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ ओडिशा एटा पढ़े देछि, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़े देछि, एनिमल हजबेंडरी ओडिशा एटा पढ़े देछि, कम्युनिकेशन इन सिनेमा ओडिशा एटा पढ़ाई, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल ऑफ ओडिशा पढ़ाई जाइए, एजुकेशन हेल्थ सेक्टर इन ओडिशा एटा पढ़ाई जाइए और ओडिशा बेसिक इनफॉरमेशन पढ़े देछि। आ जेतिकी बाकी रहला कि चैप्टर सेटा सब पेड अच्छी माने कह गले सब जाक चैप्टर गुड़ा पाखापाखि 20 ରୁ 25 मिनट कि 40 मिनट भितर बहुत चेष्टा कराई पूरा डिटेल रे बुझे सारी माने है। देखो ये पूरा आप जो देखिए टोटाल सब चैप्टर को मिसले 15 घंटार वीडियो माने 15 घंटे आपन पूरा चैप्टर सरजी आप पूरा मास्टर हो ओडिशा जिले कौन भी आप गोटे मार्क कटबनी है कहीं एत डिटेल से बड़े डिटेल देछि सब जिन पैक्स देछि। सेकेंड कथा करना आम पाखे सब चैप्टर वीडियो अवेलेबल अच्छी है। तेणु आम कौन कर फ्री सर्विस भी देचु कि पेड सर्विस भी आम रखीचु। देखो जदि आप पेड सर्विस ना पाई जाऊँगी आप 50% आपन को एडवांस आपणकर रोचे एडवांस जो मैंने पेमेंट कर 50% डिस्काउंट रोचे। समरी नोट माने अपन चैप्टर सरीबो जो दिन वीडियो देखिले अपन संगे संगे अपन समरी नोट मिल जिवो ताको पढ़ी देबे अपन बेस किछ पढ़िया दरकार नै। डेली 12 टाइम MCQ 35 डेज माने 420 टा क्वेश्चन इंपोर्टेंट बेसिक क्वेश्चन जोटा पढुची परीक्षा रे से लेवल क्वेश्चन हम दोचु। ओडिशा 360 डिग्री ई बुक गोटे फ्री रे अपन दोचु हला सेतर आपनकर सेते सब जिंस रहिची जोटार कि मार्केट कॉस्ट एक्चुअली कहया गले 50 रुपीस पर डेटा फ्री पोस्ट मिलुची। 35 वीडियो प्राइस
प्राइवेट यूट्यूब चैनल रे आम आपको अपलोड कर दौचु सेटा प्राइवेट रहिबो आपनको जो माने एटा परचेज करिवे सेही मानको मेल आईडी ही एक्सेस करि परिबो हला जो माने परचेज करिवे से मानको मेल आईडी ही से वीडियो एक्सेस कर परिबो फ्री वाला करि परिबे नाही तापर प्राइवेट टेलीग्राम चैनल आपको मिलिबो न व्हाट्सएप चैनल मिलिबो सेटा आपन क्विज डिस्कशन करा जिवो आपन टोटल प्राइस होची 35 टंका हला 35 टंका माने गोटे छोट छुआ मध्य एटा अफोर्ड करि परिबो एमिति बहुत बड़ जिंस नो सेकंड कथा 35 टंका नै कि मु बहुत बड़ लोकहि जेबिनी काने एति परिश्रम करिया पडु जे से बहिटा फोटो उठाए हला पर तापर ताको पीडीएफ बना जिवो पीडीएफ बना पले विभिन्न सॉफ्टवेयर यूज करके ताको बुझेबो जणे हला तापर बाकी रहला त आपण बुझी साइला पर आपण को क्विज दबो एते जिंस जणे करूची हला कारण भाबंतु आपण भाबिनो तो 35 चैप्टर रो आपण को जति आपण मिली गला आपण वीडियो मिली गला त गुटे वीडियो रो प्राइस केते पइला टंका तो आपण अपलोड कर परिबे हला तनो मु बहुत जिंस किसी कोनी हला देखंतो एठी आपनकर पका पके जोडा मो 7 घंटा वीडियो जडी सेते बहुत गुडिए फ्री चैप्टर भी अछि पेड चैप्टर भी अछि जो माने नै छै से माने पेड चैप्टर पेड फ्री सब देख परचंदी हला आ आपण मन जो चाहेबे निश्चित भाबरे एटा को एक्सेस करि परिबे मात्र 35 टंका आपण भाबंतुन जे एटा आपण गले ओएसएससी जिले हमर आसीबो अपकमिंग जेतिके रिक्रूटमेंट आसीबो गवर्नमेंट रो सब जगह रे आपण ओडिसा निश्चित भाव पड़िबो 35 टंका इज नॉट अ वेरी बिग डील आपण गोटे एबे जाय कि बाहर मोमो खाइले कि गुपचुप खाइले कि जा खाइले मोटे आपण 35 टंका रो भी अधिक खर्च होस तनो 35 टंका इज नॉट अ बिग डील आपण माने क्यूआर कोड स्कैन करि मते 89937190 नंबर मते व्हाट्सएप करिवे व्हाट्सएप करले मु आपण मान को डिटेल्स क्रॉस चेक कला पर आपण मान को आपण मेल आईडी मागी आपण को वीडियो एक्सेस दे देबी ओके आज रो वीडियो जति आपण भल लागला निश्चित नंबर आपण माने मते कमेंट सेक्शन जणिबे आपण मतामत कोन थैंक यू सो मच।